Mike, Vijay, Michael. Gurubhyo Namaha. Good morning, everyone, dear faculties, and my dear students. Today, we all gathered here to celebrate 5th Varshika Aaradhana Mahotsav of His Holiness Poojya Shri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal. So, we begin this Mahotsav with Sangeetanjali by Brahati and team. Stand up for the prayer. Get up. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नमामि धन्वन्तरिमतिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं हातारमीशं विविधौषधीनाम् Hello. Everyone can sit down, please. Now I will present the Tota Kashtakam in Raga Malika. अखिल शास्त्र सुधा जलते महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शङ्कर देशिकमे शरणं
भवशङ्करदेशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदुःखविदूनहृदं रचया किल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणम् भवता जनता सुहिता भविता निजबोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेक विदं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय जलधिं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं सुकृते दिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिथीनमिमं परिपालय मामतिथीनमिमं परिपालय मां भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामसचलता अहिमां सुरिवात्र विभासि गुरो भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् गुरुपुङ्कव पुङ्कवकेतन ते समतामयतां नहि कोऽपि सुधि शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् विदितान् मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति कुरु धृतमेव विदेहि कृपां सहजां भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् Now I request Priyadarshini ma'am to give a brief introduction about Swamiji's life. Ma'am, please.
सकता है। धर्म का प्रश्न करना मना नहीं है, धर्म नहीं है, इसमें करके ही संदेह दूर होगा, संदेह दूर होने विश्वास बढ़ेगा। Shri Gurubhyo Namaha. Today, being the Phalguna month, Shukla Paksha Trayodashi Tithi, we have gathered here to celebrate the Aaradhana Mahotsava of His Holiness Poojya Shri Jayendra Saraswathi Swami. So, taking this day as an opportunity, let us see a brief introduction about Swami, his uh, achievements or his contributions to the society. Not the achievements, the contributions done by Swami to the society for the welfare of the mankind. So, today, the fifth Aaradhana Mahotsava of His Holiness Pujya Sri Jayendra Saraswati Shankaracharya Swami. Sri Jayendra Saraswati Swamigal was born as Subramaniam to Mahadeva Iyer and Saraswati Ammal on 18 July 1935. He completed schooling at Irulniki Primary School and at a middle school at a nearby village. Then he shifted to Aveda Pathashala at Trichy. He visited the village on holidays and used to play normal games with the children of his age. His Holiness Swami Chandrasekharendra Saraswati selected him as his successor when Sri Jayendra Saraswati Swamigal was only 19 years old. And so, born in a village in Tamil Nadu's Tiruvarur district, Sri Subramaniam became the successor of Swami and became the 69th old. Oh. So he was initiated into sannyasa on March 22nd, 1954. With His Holiness Pujya Sri Jayendra Saraswati Swami at the helm, the Peetham expanded its footprint in education, health, employment, temple renovation, etc. Few to mention. It is due to his efforts that the Kanchi Kamakoti Peetham established religious and social institutions in many parts of the country. He visited Manasarovar and Kailash in 1998 and became the only Shankaracharya to do so after Adi Shankaracharya. There he installed the idol of Adi Shankaracharya. One of his important contributions is founding of the Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishnu Mahavidyalaya. Om. Om. So, he installed the idol of Adi Shankaracharya, and one of his important contributions is founding of the Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishnu Mahavidyalaya, the Dean University, in the name of his guru. Sri Jayendra Saraswati Swami was undoubtedly responsible for expanding the social outreach of the month. He visited Dalit colonies and even helped them in renovating their temple and assisting them in other ways. Every year he used to honor experts in various fields from all communities. He delivered religious discourses involving himself in various spiritual and social activities as well. Under his guidance, the Mutt started several schools and hospitals. The Mahaswami have ensured that the Mutt involved itself in various social activities.
Thanks to this effort, the mud today runs several schools, 8 units and hospitals. We also managed to establish a direct connection with the patient. His 65-year-long academic life was equally marked by activism, by expanding the social outreach activities from the north to east was advancing of and health talks with all stakeholders, including mission representatives. Most of the high-profile politicians and select leaders, ranging from the President of the Country to the Prime Minister and Chief Minister, made it a point to visit the country once in a while. These are very, very key points. Just to see the magnificent work, just to share few words about the magnificent have done in the career of Swami's life. We are very honored and blessed that we could have an opportunity to recollect all these and know them in the auspicious day of Swami's life. Thank you all. Namaste to all the good భగవత్పాద శంకరం హలో 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 చిక్ 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 హలో 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 చిక్ 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 హలో చిక్ శృతిస్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం అపార కరుణా సింధుం జ్ఞానదం శాంత రూపిణం శ్రీచంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదాన్వహం. పరిత్యజ్య మౌనం పటాసస్థితించ ప్రజం భారతస్య ప్రదేశాన్ ప్రదేశం మధుస్యంతి వాచ జనాన్ ధర్మ మార్గేణ యందే శ్రీ గురుభాతి చిత్తే. జయ జయ శంకర హర శంకర్. राम राम. श्री जयेंद्र सरस्वती श्लोक मालिका. भजेऽहं भगवत्पादं भारतीय शिखामणिम् अद्वैत मैत्री सद्भाव चेतनाय प्रबोधकम् अष्टषष्टितमाचार्यम्
वन्दे शङ्कररूपिणं चन्द्रशेखरयोगीन्द्रं योगलिङ्गप्रपूजकम् वरेण्यं वरदं शान्तं वदान्यं चन्द्रशेखरं वाग्मिनं वाग्यतं वन्द्यं विशिष्टाचारपालकम् देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्यसुखप्रदं बुधपामरसेव्यं तं श्रीजयेन्द्रं नमाम्यहम् वृत्तवृत्तिप्रवृत्तीनां कारणं करणं प्रभुं गुरुं नौमि नताशेषनन्दनं नयकोविदम् प्रजाविचारधर्मेषु नेतारं निपुणं निधिं वन्देऽहं शङ्कराचार्यं श्रीजयेन्द्र सरस्वतीम् सितासितसरिद्रत्नमज्जनं मन्त्रवित्तमं दानचिन्तामणिं नौमि निश्चिन्तं नीतिकोकिलम् सरस्वती गर्भरत्नं सुवर्णं साहसप्रियं लक्ष्मीवत्सं लोलहासं नौमि तं दीनवत्सलम् गतिं भारतदेशस्य मतिं भारतजीविनां वन्दे यतिं साधकानां पतिमद्वैतदर्शिनाम् इति श्री शंकर विजयेन्द्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामिभिः विरचिता श्री जयेन्द्र सरस्वती श्लोकमालिका। ओम तत्सत्। आचार्य जी, क्या धर्म पर प्रश्न उठाया जा सकता है? धर्म का प्रश्न करना मना नहीं है, अधर्म नहीं है। प्रश्न करके ही संदेह दूर होगा, संदेह दूर से विश्वास बढ़ेगा। प्रश्नोत्तरी ही अपना जीवन है। जय जय शंकर हर हर शंकर, 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 जय जय शंकर हर हर शंकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव। 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा प्रतिष्ठित की। अद्वैत वेदांत के सारांश और मूल विचारधारा के प्रचार के लिए इस दर्शन का ज्ञान अपने गुरु श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती से प्राप्त करके अब जगत गुरु श्री जयेंद्र सरस्वती 69वें पीठाधिपति हैं, जो शंकराचार्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजी परंपरा से आ रहा है, दक्षिणामूर्ति से, नारायण से लेकर के आदि शंकराचार्य से परंपरा से आ रहा है।
परंपरा में आने से एक लाभ होता है, एक आदमी दूसरा आदमी तैयार करता है, एक आदमी दूसरा आदमी तैयार करता है, तैयार होकर उठाता है सिर पर, आशीर्वाद करके दीक्षा करके वो शक्ति ताकत परंपरा से आ रहा है। अचानक जो गुरु जी होगा उनका ताकत नहीं मिलेगा, अपना व्यक्ति ही ताकत होगा, लेकिन परंपरा से आने वाला का बड़ा शक्ति ऐसे ऐसे शंभो और मूर्ति चरती भुवने शंकराचार्य रूपा। शंभु का परमेश्वर का जो शक्ति है वही शंकर रूप में होकर के शंकराचार्य रूप में होकर आजकल भी चल रहा है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा और बेटा जो गुरु चाहे सो ही कहे, गुरु आज्ञा में निस गुरु की महिमा अपरंपार, अक्षर ओम में करत विहार, गुरु चरणन रज मस्तक धरी, भव सागर हंस हंस के तरिए, गुरु आज्ञा में निस दिन भरी। तैयारी हो गया अभी से। गुरु जी का क्या आवश्यक है, कैसे प्रश्न किया है गुरु जी ने भी, अपना आदि शंकराचार्य गुरु जी ने। उन्होंने कहा ईश्वर का कृपा लेने के लिए गुरु जी का कृपा आवश्यक है, डायरेक्ट विद्युत शक्ति नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसे ही आत्मशक्ति अध्यात्म भाव का भी डायरेक्ट जाना आध्यात्मिक जाना ठीक नहीं, गुरु जी द्वारा उधर होना, इसके लिए गुरु आवश्यक है। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। राम शरणो मम श्री राम शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणो शरणो मम शरणो मम शरणो मम शरणो मम शरणो यही हमारा गुरु परंपरा ही भारत देश का गौरव है, दूसरा कोई चीज का नहीं है, कोई धर्म में नहीं, कोई देश में भी नहीं। गुरुजी, आज सुबह नींद से जागते ही आपके मन में पहला विचार क्या है? सुबह सुबह ईश्वर का उच्चार ही आना, वही आ रहा है, दूसरा उच्चार कोई नहीं।
The nature of Anantaram Kena Uktam Sukhe समन्वय रूपेण कर्तुं शक्यते गुरुजी जीवन का उद्देश्य क्या है? जिंदगी का पर्पस भगवान का भक्ति, जनता का सेवा, दोनों होना। तो होने से आखिरी में प्रभु का कृपा से ज्ञान प्राप्ति होता है, ज्ञान प्राप्ति से मुक्ति मिलता है, पुनर्जन्म नहीं आता है। सूर्योदय की तरह अद्वैत के दर्शन का प्रचार आदि शंकराचार्य ने भारत वैदिक परंपरा में एक बड़ा चीज अद्वैत वेदांत, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा सारी संसार एक परिवार रूप में होने का, जोड़ने का अद्वैत अत्यंत उपयोग होता है। त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु व्यर्थम यस्य मयि यस्य विष्णु सर्वस्मिन् पश्चात्मानं सर्वत्र उच्यते भेदा ज्ञान। ऐसे गुरु शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया है। मेरा ऊपर, आपका ऊपर, तीसरी का ऊपर, सभी का ऊपर अंतर में परमात्मा विराजमान है। इसलिए कोई का ऊपर द्वेष मत करो, गुस्सा मत करो। मॉरल साइंस का द्वारा उपदेश किया है। सबके ऊपर प्यार करो, द्वेष मत करो। ऐसे बहुत उपदेश दे दिया गुरु शंकराचार्य ने। ये उपदेश एक आदमी के लिए, एक देश के लिए, एक जाति के लिए नहीं है, सारी जनता के लिए होता है। मेरा हाथ उम्र से हुआ तब से मेरा मन अपना हिंदू धर्म में आ गया। 14 उम्र में अपना गुरु जी के लिए आऊँ कहा। फिर 18 उम्र में सब ट्रेनिंग लेकर के 18 उम्र होने के बाद इसमें आ के एक बाजू पर अध्यात्म पूजा वगैरह, पाठ वगैरह, दूसरी बाजू पर सेवा, दोनों भी साथ साथ मेरा शिक्षा मिला। उसके अनुसार अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किए हैं। हर हर शंकर जय जय शंकर। आदि शंकराचार्य द्वारा सत्य की खोज की यात्रा को हमारे पेरियवा जन जन तक पहुंचाते हैं। धर्म प्रयास बढ़ाने के लिए पेयजल में संपर्क करेंगे, कार में संपर्क करेंगे। इसलिए कोई होने भी धर्म प्रचार का मुख्य उद्देश्य काम चल रहा है। ये धर्माचार्य का काम है। हर हर शंकर जय जय शंकर। किसी भी तकनीक से जनता तक पहुंचने में आचार्य जी को कोई संकोच नहीं।
इतना भी उन लोगों का भाव है। कल देखा है आपने सिंगापुर वाला वीडियो से नमस्कार प्रणाम वगैरह अच्छा किया है। इसलिए जो संपर्क होगा उससे बढ़ेगा। पार्वती बतये साइकिल में जाता है, कार में जाता है, लोग जाने में रास्ता में कोई मध्य देने से ऐसे ऐसे करता है। ऐसे भावना है, अंतर से ही आता है भक्ति। इसलिए भारत का भूमिका मुख्य चीज भक्ति है। गाँवों या नगर हो सब जगह पर आदमी का भक्ति प्रदान हो के उसका नहीं छोड़ा है, पकड़ भक्ति का ऊंचा स्थान जब पहुंचे ही समापन है। इसलिए अभी नर्सरी में हम लोग हैं, आगे जाना है पीएचडी का। ऐसे ऐसे होकर के भक्ति बढ़ने से बढ़ने से बढ़ने से अंत में ज्ञान प्राप्ति होगा, जिसका दूसरा कोई नहीं है, रास्ता ही नहीं। हर हर शंकर शंकर हर हर शंकर जय जय 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 शंकर। पेरेवा एक असाधारण आत्मा है जिन्होंने 3 बार भारत भर की पदयात्रा की। भारत की आत्मा को इनसे अधिक कौन समझेगा। अभी ऊपर लाने का भी प्रयास का जरूरत नहीं है, नीचे जाना बिना होने के लिए बहुत प्रयास आवश्यक। डी प्रमोशन नहीं होना जीवन पर उतना ही अत्यंत आवश्यक। ऊपर होना जब समझेगा आगे चलेगा, लेकिन समझना बिना अज्ञान से नीचे हो रहा है, वो डी प्रमोशन हो रहा है, उसका रुकने के लिए बहुत प्रयास आजकल आवश्यक। आचार्य जी, क्या पूजा पाठ करना ही धर्म है? एक्चुअली भी धर्म है और दान भी धर्म है, अच्छी वाणी सत्यवाणी बोलना भी धर्म है। अनेक रूप में धर्म का काम बहुत होता है जीवन का। आचार्य जी, अगर भगवान अंतर में है तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? सब जगह भगवान होता है मानते हैं ना, इसलिए मंदिर में भी है। वहां जा करके देखूंगा, वहां नहीं दिखता है, वहां दिखता है, इसके लिए जा रहा है, इसके लिए उसका मना करना। वहां भी देखेंगे, देखूंगा है नहीं है, देखूंगा, उसके लिए जाता हूँ। हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। आप लोग सेवा कर रहा है, इतना तकलीफ होने भी, घर तकलीफ, दीवार तकलीफ और देश का सुरक्षा में आप तकलीफ, विदेश में तकलीफ, इतनी तकलीफ होने भी आपने क्षमा से सहन शक्ति से जो काम कर रहा है, आपका ऊपर हमारा आशीर्वाद। भगवान आपके साथ रह करके आपका भी रक्षा करना, देश का भी सुरक्षा करना।
बहुत ही हमारा आशीर्वाद। राष्ट्र के स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए गुरुजी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರಸಿಗಾಜಿಗೆ ನಾರಕ್ಷ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಳ ವಾರ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಅರ್ಥ ಜನಾಲು ಇರ್ತದೆ ಗುರು ಇನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಸುಡದಲ್ಲ धनवान, निर्धन, दलित, बेघर, गांव या शहर हमारे लिए भले ही अलग अलग हों, परंतु श्री जयेंद्र सरस्वती के लिए सभी एक समान हैं। इस प्रकार वे अद्वैत दर्शन सार्थक करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि एक ही आत्मा है, ईश्वर रूप में होने भी एक ही ईश्वर है, लेकिन अरूप स्वरूप विग्रह ऐसे नाना प्रकार से होते कल्चर होता है। कल्चर का निश्चय अपना अपना धर्मों के अनुसार ईसाई मुसलमान हिंदू पारसी कोई होने को अपना अपना कल्चर के अनुसार बदलता है, लेकिन आत्मा का रूप में फिलॉसफी रूप में एक ही होता है। हर हर शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। बहरामपुर उड़ीसा के लोगों के लिए जगत गुरु एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रूप में अपने आशीर्वाद के साथ पदार्पण करते हैं। The first thing he told me that the service to mankind is service to God, and that service is to be done as per the present day knowledge. Now, before this institution came up into existence, a large number of patients has to migrate from the northeastern region to Chennai, particularly Sankanethala and other places. So that has been observed by His Holiness, and they suggested us and to establish a state-of-art eye hospital. For a patient coming from an interior place in Nagaland to Guwahati, it is very difficult for him. So the facility must be available in his local places. We have some satellite institutions also. So these institutions are placed in the rural areas, and from there the villagers they attend our hospital and get treatment free of cost. Our plan for the future is to convert this institution into a model institution and a small satellite full-fledged unit to establish in the different parts of the northeastern region. This another 4 or 5 years will be able to achieve this target. भजत अखिलाग्रजयी आत्मवदेव परान् मैत्री भजत अखिलाग्रजयी आत्मवदेव
1,40,000 गांव है, सब गांव में आ गए, सब 6.5 लाख गांव और सभी जगह आ जाए। आचार्य जी, ज्ञान की इस आधुनिक नगरी को क्या हम भारत का नया तीर्थ स्थान कह सकते हैं? तीर्थ स्थान पुण्य रूप में होता है, ये कर्म रूप में तीर्थ स्थान। ज्ञानी लोगों का आशीर्वाद होना, विज्ञान आगे बढ़ना, दोनों साथ साथ बड़े सही देश केवल भौतिक से कोई फायदा नहीं। ज्ञान से सब लोग का शांति मिलेगा, ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये जड़ शक्ति के साथ, भौतिक शक्ति के साथ मिलने जुलने से और बढ़ेगा। इसलिए हमारा देश आगे बढ़ने का समय आ गया है, बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। भविष्य में अपना देश का ज्ञान बनाने का विकास का मार्ग ऐसे भी आगे आगे बढ़ सकते हैं। केवल राजनीति से नहीं, दूसरी तरह की विज्ञान से भी देश बच सकता है, आगे आ सकते हैं। आदर्श रूप में एक कार्य हो रहा है। गांव गांव में भी अनपढ़ लोग में भी दिखेगा नहीं होने की, बोलने वाला होने की, उससे ही कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए काम हो रहा है। आज विश्व प्रभुत्व और आधुनिकता के इस युग में भारत की संस्कृति और सभ्यता को कैसे सुरक्षित रखा जाए? बुद्धि का काम सोचना, अच्छा विचार करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, कोई शरीर के ऊपर अपना संस्कृति के आधार पर खाना पीना, ड्रेस वगैरह होना, ये दो जब तक होगा तब भी देश बचेगा। मॉडर्न चल रहा है कि अपना संस्कृति का जब तक अनुकूल है तब तक हम स्वीकार करें। गैंगटॉक सिक्किम पेरियवाद में संदेश फैलाते हुए एक मंदिर को मूर्त रूप देते हैं। ये हरा कहता कुड़े दूर पहले कुछ पोट रहे रुद्राक्षता है अदवारा पर बेटिया बेटा तीसरी बात His coming to Sikkim is a blessing to the people. There will be a good exchange of spiritual and moral values from Kanchi to Panchanganга, from Kanchenjunga to Kanchi. There will be a good integration hereafter. यहाँ ऋषि मुनि लोगों का निवास स्थान है, ऐसे पवित्र स्थान है सिक्किम। इसमें ये लोग निवास करते हैं। आप लोग भाग्यशाली है, पुण्यवान है। उद्योगपति, नौकरी वाला, बिजनेस वाला, सब लोग मिलकर के इसका आगे बढ़ाना आपका हाथ में है। ये जय शंकर, हर हर शंकर। टेंशन से क्रोध बढ़ रहा है। एक प्रयास करता हूँ सफल होने के लिए, ये नहीं होता है, फिर गुस्सा आता है। तो इतना प्रयास क्या नहीं आया, ऐसे गुस्सा आता है। गुस्सा होकर की बुद्धि खराब होता है। खराब होने से कोई काम करने का हम तैयारी होते हैं। से आशा ही उसका बड़े भाई है। बड़े भाई से छोटा भाई आकर के, क्रोध भाई आकर के इतना तकलीफ दे रहा, इसलिए आशा का कम करने से क्रोध ऑटोमेटिक हो जाएगा।
2 बार रोए, सपने नहीं साक्षात में रोए। एक बार एक हाथी थी हमारा मठ में, उसमें बहुत काल तक मेरा सवारी किया, एक दिन मर गई, उस दिन में सोचा था। फिर अपना गुरु जी स्वर्गवास हो गया, उसी दिन में सोया, बाकी जीवन में कभी भी रोना नहीं। कोई का डरे नहीं है, क्योंकि एक दिन में जाना एक दिन आना, क्या डर है, इसलिए कोई का डर नहीं बोल रहा, मैं ही बोल रहा, डर मत करो, मैं बोलता हूँ कि किसके लिए डरता हूँ। ये त्यागपूर्व का महिमा का दिखाने के लिए एक काषाय वस्त्र होता है। रेड अलग है, काषाय अलग है। रेड डेंजर है, ये सात्विक है। इसलिए सात्विक समाधान होने के लिए, त्यागपूर्व काम होने के लिए साधुओं का द्वारा ये पहन करके परंपरा से संत साधु महात्मा द्वारा शांत बनाने के लिए ये काषाय आ गया। एक ही है, सब लोग हम लोग है, एक अंग है, गणित में एक बुद्ध में एक अंग है। ये भेद करने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका दूर करने के लिए प्रचार। ये ड्रग्स के नाम पर विज्ञान आदमी को बढ़ाए, वो ठीक नहीं। अभी अपना देश में अब्दुल कलाम है, बड़े विज्ञानी है, उनका ड्रग्स रिस्क कोई नहीं है, आम जनता रूप में है। लेकिन ऐसे सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग गड़बड़ भी कर रहा है। ये देख करके जनता का मन में नागरिकता पर ड्रेस बदल करके खाना पीना बदल करके बुद्धि बदल के कर रहा है, ये ठीक नहीं है। बुद्धि का काम सोचना, अच्छा विचार करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, कोई शरीर के ऊपर अपना संस्कृति के आधार पर खाना पीना ड्रेस वगैरह होगा, ये दो जब तक होगा तब भी देश बचेगा। हमारा संस्कृति में अंग्रेज उपयोग करते हैं, लेकिन अपना संस्कृति के आधार पर हम काम कर रहे हैं। उदाहरण एक है, ए फॉर एप्पल सिखाता है, हम ए फॉर अर्जुन बोलते हैं, एन टैरोल बोलते हैं, आर फॉर रैट बोलता है, हम लोग रामा बोलते हैं। लोग का कुछ तकलीफ होता है, हमारे पास आता है, पूछता है, कुछ समाधान बोलते हैं, लेकिन ठीक करने वाला बहुत कम है। सुन करके आशीर्वाद लेकर के चलेगा, फिर अपना बुद्धि के अनुसार काम करेगा। इसलिए राजनीति के हम जितनी उपदेश करें कोई फायदा नहीं। संपर्क गौरव होता है उतनी ही उनका गौरव होता है। हमारे इतने लोग आ गया, ऐसा बाहर लोग अपना ऊपर गौरव करता है, इतना इतना बड़े लोग आ गया, ऐसे पब्लिक लोग मानता है। प्रभु भगवान का रामचंद्र जी का है प्रसन्न वदन, हाँ ऐसे रामचंद्र जी का है, ऐसे प्रसन्न वदन होना हमेशा। देश का एक स्वप्न देख रहा हूँ अच्छा आने के लिए, ये स्वप्न नष्ट होता है, देश का स्वप्न आने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई योगी नहीं, पीठ में एक आकर के एक पीठार्जनी का नाम से पर सेवा कर रहा हूँ देश की। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, हर हर शंकर हर हर शंकर। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। जय जय शंकर हर हर शंकर, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर It was real. It was really a divine video, and we got enlightened by seeing this. Now I request Dr. Swaminathan sir to share his experience with our Swamiji. Om Sri Gurubhyo Namaha. In the year 1995, this institution was started with the blessings of His Holiness. I remember the very first day of this college because on the very first day I joined this institution and two more faculty members were there. One member from Rasasastra department and one Dr. B. Shanti. So we three joined here with the blessings of Acharya. And I remember the lighting of the Kuttu Vilaka also by Dr. B. Shanti in front of the Swamiji. And the students, the first batch of this college, the sanction was about 27 students joined, and we started taking the classes. After taking all the students to the Kanchi Mutt, Swamiji blessed them, and the affection that the Swamiji had towards our Ayurvedic medical system just cannot be said in words. He had such a faith that any problem, any physical problem, that Swamiji used to call me to Kanchi Mutt and discuss, and frequent cold, frequent pain in the body, anything, Swamiji would opt for Ayurveda, not allopathic system. We used to take medicines from here, deliver there. Swamiji used to take all that. And one day, Swamiji came to the campus. I was just sitting and doing my Sandhya Vandan in the morning. He came here and said, this campus is so big, why don't we start with a cultivation of vegetables so that we can take it to the public and distribute it? I said, sure, Swamiji, whatever Periva says, I will agree. Then in the van, he was sitting and Swamiji dropped 10,000 rupees cash on my hands and said, you start cultivating. I will send you a person to look into the accounts. Yes, Swamiji. So we both started, and I cannot, what I say, that day I couldn't understand how fertile this land is. See, the cultivation of lady's finger,
brinjal, tomato, spinach was so immense that we could reap lot of vegetables and supply to the public and to the Kanchi Kamakoti Peetham also, where lot of boys are studying in Veda. That we could do, and the surplus of water we have here and the land that you are now is such a fertile land. And lot of incidents I have to narrate you because it will go in 2 hours also. Another incident that Swamiji was in Tirupati. I was called there to stay with them with both the Swamijis, and only we three were there. That day I cannot forget. I just want to share with you. Right side to me was the present Swamiji. Left to me was Jayendra Saraswathi Swamigal. And we three exactly fall in the star. That is, Uttaradam is for Balapiriva and my star is Shravana Nakshatram Tiruvonam and Swamiji is Avittam. So we were just jokingly talking about it. Oh, we three are standing together. So I was so happy to listen to such words. And I was fortunate enough to touch both the Swamijis and treat in Ayurvedic way. Swamiji had, in fact, it was the present Swamiji who had a cervical problem, and many Pandits were called, whom to call. It was my name which came into the mud. So I was called there and I was asked to treat the Swamiji. The other day, the person who was doing the homam here by name Sunandan Nambodri was also later called on to join with me. So we could treat the Swamiji and recover him from the cervical problem. Because in Ramachandra Medical College, the present Swamiji was said that he had to undergo a surgery very urgently. Otherwise, there could be a quadriplegia. Swamiji did not agree. Both the Swamijis have such a faith in Ayurveda that we could treat them successfully and make him all right. And another incident that I cannot forget is that Swamiji was touring somewhere in Karnataka. And I was called from here to go there with Ayurvedic medicines. I went there. And Swamiji told me that I am proceeding to Mukambika for 5 days. I will come back here. You go to a doctor by name Jagdish, who has a hospital in Brunei, and you go and take training under him. I said, okay, Swamiji. Then I went to that Mysore. I was in Mysore that time, and I went to that hospital. He is a wonderful doctor. I tell you that he practices only pure Ayurveda with plants grown in an organic way. A lot of patients are there. I was taught how to do the therapy in Ayurveda, how to give pressure, where to exert more pressure, where to give less pressure and all that. So 5 days I was there. I didn't know for what purpose I was asked to. So I was there. That time a person came in the mud. Swamiji introduced me to him and said, this person will take care of you for the 5 days. I said, okay, Swamiji. Then Swamiji left. He had treatment also in Ayurveda. And finally he declared who he was. The person is none other than the father of our present finance minister, Nirmala Sitharaman. And so I could talk to him. And the medicines that I could prescribe was Vidaryadi Gritam with the Shanka Basma and Abraka Basma did wonder for him, that he could recover from his peptic ulcer in toto, and he had conveyed that to Nirmala Sitharaman. And ma'am also had said, one day we will go to Sri Jayendra Saraswathi Ayurveda College. So I hope that day will come soon. And the other incident was that in Tirupati, when Swami was not well, he asked me,
uh, what to do now? Now that the pain is nagging me in the spine, I mean to the Sri Jayendra Saraswathi Swamigal, and I said, Swamiji, why don't we go to Coimbatore and take an Ayurvedic treatment, because there is a very famous hospital there. Better stay there. Then Swamiji said, okay, you be with me for 2 days, we will go. Then after 2 days, a chartered flight was arranged from Renigunda to Coimbatore. And while boarding the flight, we were only 4 members. That one member is the present owner of Shankara TV in Bangalore, and another one was the cook, and myself and Swamiji. Swamiji asked me a nice question. Have you ever traveled in flight? I said, no, Swamiji. This is the first time that I am traveling. Then he just smiled and said, okay. You know that after that, I could have traveled by flight more than 60 to 70 times. So it was a blessing in disguise that I could get from the Swamiji. And we all reached Coimbatore. It is a place called, the hospital name is Aryavidya Pharmacy. The Krishna Kumarji, the founder of that hospital, came and he took the Swamiji along with me to the place in the room. And I was in fact staying with the Swamiji for nearly about 7 to 8 days. That Pongal was approaching. Swamiji said, don't you want to join with your family for Pongal? I said, yes, Swamiji, I want to. Then you get 2 people from Ayurveda college from Nasarat Pet. Let them come here and stay with me, you go. Then I left the place. And the therapy was given by one doctor by name K.G. Ravindran, who is my classmate. And he was giving the treatment. So that's an incident that I cannot forget. The Swamiji had a good recovery with all that. But finally, a doctor by name Dr. Ramachandran, a neurophysician, said, this, you cannot keep on living like this, Swamiji. You have to go for a surgery that no other go. Then the Swamiji went to Mumbai, where Ambani family is there. They have such a faith, they have such a bhakti towards Kanchi Mat, that all the people were there. Neetu Ambani, Ambani was there. Everybody took Swamiji to the hospital, had a minor surgery, and then it was all right. And I could stay in the mud for a long time and treat the Swamiji with our herbs collected from our herbal garden. We used to collect a lot of leaves, boil them in water, and give a warm water fermentation also on the spine. So as age advances, he was about 80 years old then. As age is advancing, that naturally, wear and tear is very common to all human beings. That was also there. Many a time, I could see the pulse of the Swamijis. Both the Swamijis I could see. And before the day of the Mukti, the Kanchi Mat, I was the last physician to be called in the Kanchi Mat. At about 10 o'clock in the night, I had a phone call and that I should rush to the Kanchi Mat. I said, okay. Then the next day morning, I went there. Afternoon, the governor of Tamil Nadu was about to visit. Purohit was about to visit that place. And Swamiji, when I entered, he just showed his hands. Look at my pulse. Then I went through the pulse reading and said, some of the parameters are not good here. By looking into the file, then all people assembled, his cook mainly. I took him aside and told, what are all the diet prescriptions that can potentially help the Swamiji to come out of the problem? So we were discussing for a long time. And in fact, Swamiji started all that, food and all that. But the very next day was his Mukti day. So that was the very sad part of that. That of course, Swamiji was a bit old also by the time. He was about 82 years old. But I tell you that every time, whenever he goes to Chennai, Swamiji drops in here. And he comes to the campus. In fact, everywhere Swamiji had walked. The present IP also, when the construction was over,
I remember 5 ministers in ADMK government were called, and the CM Jayalalitha then told 5 ministers to come over here for the inauguration ceremony of the hospital. So we were all there. Our students were very good to help in the ceremony of the reopening of the hospital. And the 5 ministers spoke. The one day went on very well with IP, and there were plans start with what you call a cow shed and all that here, and also had plans of starting cancer institute in this campus. All these plans were there, and every time Swamiji used to drop in here and talk about it. I remember the day of the Deputy Prime Minister's visit here, L.K. Advani. He came here, and before 5 days, the campus was closed. I was the man to reside here inside. I was with the family inside, that I was not allowed to go out of the campus for 5 days. Then I asked them, all the military people, how to get vegetables and all that. Then they said, we will arrange everything for you. You should not go out. Nobody is allowed from outside, inside, inside, outside. So that was an incident that I could remember here. And when L.K. Advani ji came here, in fact, we had a very good interaction with him also, with the Swamiji. Many incidences like this I had. Wonderful experiences. When my second daughter was born, and she was put in phototherapy in Child Trust Hospital in Nungambakam, that the child was only 1 day born. That time Swamiji came there. I said, went and cried in front of the Swamiji, my child is like this. Swami blessed with the vibhuti and said, she will be all right. Surprisingly, within 2 days, the child could come out of the phototherapy when we applied the vibhuti prasadam on the child's forehead. Such a power that the Swamiji had. Because 24 hours bhakti nam. So, this is only a very few of the remembrances that I am giving you. But the service that you are all here today because of the Swamiji, that I can definitely tell you. This school was not here that time. The year 2004, the school was not there. Swamiji was just crossing an area here, that he saw St. Joseph's Residence School or something like. Then he thought, why not we start with a school here? Because such a big campus. Then he came and started. Then Swamiji named it as Jaya Shankara International School. I was there, fortunate enough to do because that day the principal of our college was not there. So the school people called me and said, please join with the Bhumi Poojya. So that's how the school also had come now. It's flourishing very well now. The school is always full now with students. So whatever the Swamiji had done for the Ayurveda and for the school and all that, we are all happy to be here because the divine blessings of the Acharyas are all the time with us. That I'm sure that we will all come good and you will all come good. There is no doubt about it. Thank you. Thank you, sir. It was really a heartfelt experience. And you're really fortunate that you got an opportunity to serve our Swamiji. It's really a great blessing. Now I request our Chakravarti sir to come forward and share his experience with Swamiji. Please, sir. Sri Gurubhyo Namaha. Taking the refuge at the feet of His Holiness Sri Jayendra Saraswathi Swamigal. The experiences what I had
with Revered Swamiji were very little only. Even then, let me share. I visited this college in the year 95 when it was started, when the director sir was there, Vaidyanathan sir. On the day, Dr. Nandakumar, who was MD Rashastra, was joining into this college as faculty. I was here only. Later on, due to other reasons, I moved to somewhere, and on the occasion when I met and had the darshan of Swamiji, Jayendra Saraswathi Swamigal, at Kanchimat in the year 98, then the director, newly joined director, Dr. Kutumbara, who was professor to me when I was studying at Vijayawada College. He has taken up the post here as director, and they were discussing with the Swamiji to come up with a seminar. There was an institute or organization, we say, Ayurveda Shastragna Parishad, started by Sri Tumuru Seshagiri Rao sir, our guru. He was ex-director of CCRAS, and in that Kutumba Rao sir was also there, and he took up the proposal to Swamiji to have seminar to be conducted here in this campus. So that was materialized, and we were all there along with Swaminathan sir and other people. Our Sanskrit lecturer, sir now, Venugopal sir in university, he was also there. So I very well remember, even today we have got the photographs of that seminar along with Swamiji. So that was my first experience with the Swamiji. And the second incident, later on I joined at Sairam Ayurveda College as a faculty. When I visited in 2006, Kanchi Matam, and had the darshan of Swamiji, and I approached him requesting him to join in this college as faculty. Immediately he took my papers and blessed with akshatas and kunkuma, and asked me, you wait, the proposal will come. So that so happened. The very next year, 2007, November 1st, I joined here. Both the Swamijis used to remember every person with name. Whenever they used to see us, they used to call with name. Such a remembrance they used to have. And there was a old age home just by that old building besides this. And I served as in charge doctor for that old age home along with some other faculty members for about 8 or 9 years consecutively from my inception. That was 2007 November.
So he used to visit now and then in this campus, especially he visited this old age home and used to call and, he inquired whether any facilities are required for old age home, medical facilities and other things. So these were some occasions which I had the experiences, and even the Swamiji, Shankara Vijayendra Saraswati Swamiji, who is now the head of the mutt. Whenever I go to mutt, he also used to call me by name. So they used to remember the names also. So we are all very blessed enough in getting the blessings of such a great Peetham, Shankara Peetham. And we are blessed enough to have their blessings further also. Thank you. Thank you, sir, for sharing your experience. Now I request all the faculties and students to offer flower to Swamiji. Check. जयेंद्र सरस्वती स्वामी की जय। எழில் காஞ்சி நகர் வாழும் ஜகத்குருவே, எழில் காஞ்சி நகர் வாழும் ஜகத்குருவே, எளியோர் துயர் தீர்க்கும் என் குருவே, எழில் காஞ்சி நகர் வாழும் ஜகத்குருவே, எளியோர் துயர் தீர்க்கும் என் குருவே, எழில் காஞ்சி நகர் வாழும் ஜகத்குருவே. அத்வைத கீர்த்தியே அருள் வேதமூர்த்தியே, அத்வைத கீர்த்தியே அருள் வேதமூர்த்தியே, அருள்வாய் நீ என்றும் உன் ஆனந்த ஸ்பூர்த்தியே, அத்வைத கீர்த்தியே அரும் வேதமூர்த்தியே, அருள்வாய் நீ என்றும் உன் ஆனந்த ஸ்பூர்த்தியே, எழில் காஞ்சி நகர் வாழும் ஜகத்குருவே, எளியோர் துயர் தீர்க்கும் என் குருவே, எழில் காஞ்சி நகர் வாழும் ஜகத்குருவே.
மோகன புன்னகையை மனம் இன்னும் மறக்கவில்லை. மோகன புன்னகையை மனம் இன்னும் மறக்கவில்லை. மௌன தியான நிலையோ கண்களில் கரையவில்லை. மோகன புன்னகையை மனம் இன்னும் மறக்கவில்லை. மௌன தியான நிலையோ கண்களில் கரையவில்லை. அபயஹஸ்தாசி அமைதியை வழங்கி நிற்க. அபயஹஸ்தாசி அமைதியை வழங்கி நிற்க. அருள் பொழி சரணங்களே ஆன்மாவில் உறைந்து நிற்க. அபயஹஸ்தாசி அமைதியை வழங்கி நிற்க. அருள் புரி சரணங்களே ஆன்மாவில் உறைந்து நிற்க. எழில் காஞ்சி நகர் வாழும் ஜகத்குருவே, எளியோர் துயர் தீர்க்கும் என் குருவே. எழில் காஞ்சி நகர் வாழும் ஜகத்குருவே. जयेंद्र सरस्वती स्वामी की जय. காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். உத்தமர்கள் வணங்கும் குரு பீட்டம், தத்துவம் நிறைந்த குரு பீட்டம், கவலைகள் போக்கும் குரு பீட்டம், காம கோட்டி ஜகத்குரு பீட்டம். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். सद्गुरुनाथ महाराज की जय. Thank you all for your presence. Now we can disperse for lunch.